मेरे हाथ में क्या खाना है, वेज या नॉन वेज? और अगर मीट है तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मीट है? देखे बिना तो बिल्कुल नहीं बता सकते, है ना? और देख के भी पके हुए बकरी या भैंस या गाय का गोश्त अलग बतलाना आसान नहीं होता। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि मेरे खाने के डब्बे में क्या है, क्योंकि मैं मुसलमान थोड़ी ना हूँ। आई एम नॉट अ मुस्लिम बट अ हिंदू, एंड ट्रस्ट मी, दैट गिव्स मी अ सेंस ऑफ प्रिविलेज इन दिस कंट्री नाउ। क्योंकि अब मुसलमानों को मारने के लिए, जान से मार डालने के लिए कुछ गुंडों का शक ही काफी है बस। और शक इस यकीन से आता है कि जिसको मार रहे हैं वो मुसलमान है। कभी उनके कपड़े ही काफी हैं तो कभी उनकी दाढ़ी। बहुत बार देखा गया है कि उनके खाने का डब्बा ही काफी है उन्हें असॉल्ट करे जाने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें है क्या। There are armies of criminals who had nothing better to do, so they call themselves self-appointed cow vigilantes. Some have, in fact, been given licenses by state governments and influential Bharatiya Janata Party leaders. If you think they are doing anything good for the country, you are highly mistaken. They are killing our people on the streets, beating them, breaking their bones, and humiliating them, only because they are Muslims or believed to be Muslim. The cow is a sacred animal to many in India, no doubts about it. In many states, there is a ban on cow slaughter, though there is a scant provision for welfare of tens of thousands of cows abandoned by their owners once their productive life ends. But this bunch of goons, empowered by the state, is actually not interested in cow protection. They are simply criminals brainwashed with hate and ready to even kill for it. Just a few days ago, a class 12th Hindu student was chased in a car for over 30 kilometers and shot dead on the Delhi-Agra National Highway by a group of 5 cow vigilantes who claimed they mistook the boy for a cattle smuggler. मारने के बाद उन्हें पता चला कि लड़के का नाम आर्यन मिश्रा था. Now these men ran a page called Live for Nation, where many videos were posted for many years now about chasing Muslims and their cars. Yet no one took any action. And all this in the name of cow protection. It was on several social media platforms with lakhs of subscribers. So many people, young boys, are watching this and maybe even getting brainwashed by it, inspired by it. Now, after being arrested, these men said they were sorry because they had killed a Brahmin by mistake. They thought he was a Muslim. Just take 2 seconds and imagine this. This is where we are today. The regret is not over killing someone, but over killing a Brahmin instead of a Muslim. A few days earlier, again not far from the national capital, a Muslim rag picker, एक कूड़े उठाने वाले को जिनका नाम सबीर मलिक था, he was killed by vigilantes. लेकिन उनके कत्ल को लेकर there has been no regret because he was a Muslim, and so that somehow makes the murder okay. गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आर्यन मिश्रा सच में काउ स्मगलर होता या वो मुसलमान होता तो क्या उसको मारना ठीक होता? No. It still would have been a heinous crime. Where are we headed when criminals openly admit that they have no remorse whatsoever about killing except for killing the wrong person? And do you still think this is about cow protection? A 72-year-old man, Ashraf Ali Syed Hussain, was traveling by train to Mumbai to see his daughter. Some men preparing for police exams beat him up mercilessly and abused him, all because they suspected that he had beef in his lunchbox. Just suspected. The man kept pleading, but they did not care. Later, the police found that the man had buffalo meat, which is not illegal. But who cares about the law anymore, right? If they had cared about the law, these vigilantes, in fact, ये हिंदू आतंकी, इनको ये पता होता कि बीफ कंजम्पशन या पोजेशन सभी स्टेट्स में क्राइम नहीं है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, जहां पे उन्होंने एक मुस्लिम आदमी को सिर्फ बीफ के सस्पेशन पे मारा। बीफ खाना और अपने पास रखना गुनाह नहीं है इंडियन लॉ के हिसाब से। सरप्राइजिंग? Yes, that is what the law says. In fact, beef consumption is quite common in Kerala, Goa, West Bengal, Tamil Nadu, Karnataka, as well as many northeastern states like Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh. While cow slaughter and slaughter of any progeny is illegal in most parts of India, this is not so in West Bengal, Kerala, and some other states. While the slaughter of buffaloes is allowed in many states, technically even buffalo shouldn't be slaughtered. But since it's not part of our mythology, it's not sacred to us. इसीलिए जो politicians गाय के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, उनके लिए भैंस किसी काम की नहीं है. That is why most states in India allow buffalo slaughter. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। And in Uttar Pradesh, where the state
cannot still make stricter laws to protect women and girls properly, they have enforced the National Security Act for cow slaughter. हिंदू गरीब को मुसलमान गरीब से लड़वाया जा रहा है और तब तक सरकार और अमीर कैटल स्लॉटर से भी पैसा कमा रहे हैं. Some of the biggest slaughterhouses are actually owned by Hindu owners, and one of the biggest buffalo meat exporter, Alaya, even paid money to the Bharatiya Janata Party through electoral bonds. ये कौन बताएगा आपको? These laws enacted in the name of cow protection are just another tool to humiliate and attack the minorities. And criminals like the ones on your screen right now are using them with full state protection. Because the political masters cannot do the dirty job themselves. इसीलिए ये आपके बच्चों को भड़काते हैं, उन्हें उकसाते हैं गाय के नाम पे और उन्हें इतना गुस्सा दिलवाते हैं कि वो किसी को भी मारने के लिए, एक मुसलमान को मारने के लिए तैयार हो जाए. और जब आपका बच्चा सड़कों पे मुसलमान से लड़ रहा है तो इन मिनिस्टरों के बच्चे आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अमेरिकन रेसिडेंट्स बन रहे हैं, प्लम पोस्टिंग्स ले रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं. Think about it. If cow vigilantism is such a noble cause, why isn't a single minister's child a cow vigilante? क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे उनके लिए वो काम कर रहे हैं. और हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़वा के एक और फायदा भी है इनका, that you will be so distracted by hate and hysteria and the anxiety of Hindu खतरे में है that you will never question the government about rising fuel prices, inflation, unemployment or broken roads or even women's safety. Prime Minister Narendra Modi has rebuked the cow vigilantes on a couple of occasions, but he has done very little to crack the whip on their activities. जो लोग सच में गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो लोग इंसानों को सड़कों पे मार नहीं रहे हैं, but they are actually trying to save cows. And many even say that they don't even get funds from the government to feed cows in shelters and hence cows die. Do these so-called cow lovers and vigilantes care? Every day cows are dying due to heat, bad conditions in cow shelters across the country. Farmers are troubled because the abandoned cows on the streets are destroying their crops, and many cows are even dying, even causing fatal accidents on the streets after being abandoned. Do these cow vigilantes care? The answer is no. It's not about cows for these vigilantes. It's about spreading fear, hate, and violence against minorities. A girl, when she steps out on the streets, is always cautious. Today, a Muslim on the streets in India is just as cautious because he could be killed over unproven rumors. This is exactly what we criticize when it happens in other countries. We feel angry when Hindu minorities are attacked or killed in Bangladesh and Pakistan. And rightly so. So why are we doing the same to our minorities here? India belongs as much to Muslims as it does to Hindus. पर अब आप पूछ रहे होंगे कि ये जो गुंडे हैं और ये जो हिंदू आतंकी हैं, इन्हें डर क्यों नहीं लगता ये क्राइम करने से पहले? Well, why should they fear when both the law and the government support them? Why should they feel scared? An old Muslim man, Muhammad Akhlaq, was lynched by a mob in Dadri, in Uttar Pradesh, 9 years ago over suspicion of cow slaughter and beef eating in front of his daughter, wife, and mother. His son was also brutally beaten. And the BJP ministers? Well, they were supporting the vigilantes. Today, 9 years later, the case is still in court and the accused men are roaming free. The only people forced to leave their homes are Muhammad Akhlaq's family. The flogging of Dalits in Una for skinning a dead cow shocked the nation and led to widespread protests. Pramod Giri Goswami, the local Shiv Sena chief and head of a cow vigilante group, was found to be a key conspirator in the attack. He was also the one who recorded and shared the video of the attack. While the country was expressing its outrage, Telangana Bharatiya Janata Party MLA Raja Singh openly supported the cow vigilantes in a video saying, "I support the beating of Dalits who slaughter cows to eat meat. It is apt. I also support those who taught them a lesson." मैं उन दलितों को ये कहना चाहूंगा, क्या गौ हत्या करना जरूरी है? गौ मांस खाना जरूरी है? ये बहुत गलत है, क्योंकि तुम जैसे गलीज दलितों की वजह से आज जो देशभक्त है, जो धर्म भक्त है, जो गौ भक्त है, उन दलितों का नाम खराब हो रहा। और जिसने भी जो गाय काटने के लिए, जो भी दलित जो गाय को या गाय के मांस को जो ले जा रहा था, जो उसकी पिटाई हुई है, वो बहुत ही अच्छी हुई है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उन सभी लोगों का समर्थन करता हूं जिन्होंने अपने बल पर उनको अच्छे से अच्छा सबक सिखाया है।
2014 में आज से 9 साल पहले एक पुणे में रहने वाले टेक प्रोफेशनल मुस्लिम जिनका नाम मोहसिन शेख था, उनको सिर्फ अफवाह के बिना पे जान से मार डाला जाता है। पुलिस कैटेगोरिकली अपने एफआईआर में कहती है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो हिंदू राष्ट्र सेना से के मेंबर्स हैं और उन्होंने सिर्फ इस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि उसकी दाढ़ी थी, तो वो विजिबली मुसलमान था, तो उसको एक रूमर्स के बेसिस पे मार डाला गया। आपको क्या लगता है इस केस में क्या हुआ होगा? 9 साल बाद कोर्ट ने 20 गुनहगारों को, जो एचआरएस हिंदू राष्ट्र सेना के मेंबर्स भी हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। और प्रोसिक्यूशन जिसकी ड्यूटी बनती है इसके अगेंस्ट जाके अपील करना, प्रोसिक्यूशन ने अपील भी नहीं करी। और कोर्ट ने कहा कि जो मुसलमान जिसको मार दिया गया था, उसके जो लॉयर्स थे, जो प्रोसिक्यूशन था, उनके पास एविडेंस ही नहीं था, वो गिल्टी नहीं प्रूव कर पाए। फैमिली कहती रही कि जो प्रोसिक्यूशन है उनके भी अच्छे टाइज हैं हिंदू राष्ट्र सेना के साथ, इसीलिए वो इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? 9 साल बाद जिन्होंने एक लड़के को भरे चौराहे में ब्रॉड डे लाइट में सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान था, आज वो बाहर घूम रहे हैं। और उस मुसलमान लड़के की फैमिली जो 9 साल से हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस पे ट्रस्ट करके जस्टिस का वेट कर रही है, आज वो होपलेस है। आज उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। मोनू मानेसर एक बजरंग दल के मेंबर और एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड काउ विजिलेंटे हैं। और काउ विजिलेंटे भी क्यों, इनको हिंदू आतंकी बोलना चाहिए। दिस मैन वाज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग 2 Muslim boys alive. Rajasthan police were searching for him, but they only found him when riots broke out in Haryana because of him, because of this criminal Monu Manesar. That too after 8 months. And all this while, Monu Manesar was chilling and inciting more hate. Only when Haryana police arrested Monu Manesar for inciting violence in Haryana's Nuh region after 8 months, Rajasthan police remembered, oh, he was wanted. Think about it. We live in a country where one criminal, one goon, one Hindu terrorist has the power to incite riots in a place where Hindus and Muslims once lived in peace. Monu Manesar's influence is clear. Do you have close pictures with ministers? Now look at these pictures. These aren't police or security forces. They are random men, criminals who call themselves cow vigilantes and Hindutva saviors. जबकि असल में ये हिंदू आतंकी हैं, because they carry guns, brandish them to scare minorities whenever they want, using them when they see fit. We should not wait for a Hindu boy to killed by mistake. This is happening to Muslims every day and we don't care because of the hatred and hysteria created by the ruling government and the media. Think about it. Politicians are the only ones benefiting by pitting Hindus and Muslims against each other. कोई खतरे में नहीं है, पर आप और हम आपस में अगर लड़ते रहें और क्राइम नहीं रुका तो हम सब इक्वली खतरे में हैं. So do not get distracted and consumed by prejudice and hate, and instead let us ask questions to the government. Ensure better laws, better facilities for everyone, for a better united India. The choice, of course, is yours. Thanks for watching.